this hour. As Delhi prepares for protests at the borders, the traffic situation in the city has become untenable. The Delhi police has issued an advisory about the same, saying that vehicular movement will be affected near the borders in the city due to pickets and checkpoints, and have asked commuters to plan accordingly. Inbound and outbound traffic from Haryana is being routed through the Zero Palla Singhu School Toll, Piao Maniyari, Saboli and Safiabad as well. However, traffic at these borders remain heavy throughout the day. Vehicles are being allowed after due checking. Meanwhile, the NH44 beyond Singhu border has been completely closed for general traffic. Other connected roads going towards NH44, that is towards Sonipat and Panipat specifically, are also affected but remain open. 2 lanes of National Highway number 9 and as many of National Highway number 24 at the Ghazipur border are open for the general public, and similarly 2 lanes of the Delhi-Noida direct, that is the DND, are also open for commuters. However, there is a slow movement, and as such commuters have been advised to avoid these stretches specifically during peak traffic hours. I request my team upstairs to show what I have open on my screen over here. I'll give you a picture. Yes, right there on your screens you can see this is the map of Delhi showing real-time traffic. You can see most of the area within the city is yellow and red, and there are these specific points right over here, especially these red dots that you can see scattered around the screen. First of all, I'd like to in fact draw your attention towards these red dots in particular right over here where I am encircling. This is the Tikri border, where there is in fact quite a lot of traffic that is prevailing currently as the roads have been blocked. Similar situation can be seen down here in Gurugram as well as near Faridabad, where the situation is worse. You can in fact see the intensity of these red dots that highlight in fact how intense the traffic blockages are at this point. Situation is relatively calmer in Ghaziabad as well as Noida, but if we go back to National Highway 44, right here at the top of your screen, this one isolated red dot, and this entire area which is red is the Singhu border as well. So this is a picture of what exactly is taking place in and around the national capital region. Meanwhile, a host of my colleagues are joining us on the broadcast this morning. Manisha is joining us from Tikri border. Specifically, I've shown you viewers about and I've taken you through what exactly is the situation like on the ground. Let's go across to Manisha to take a look at what's happening at Tikri border. Manisha, over to you. जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मैं हूं और यहाँ के अगर हालात में आपको दिखाऊं तो हर तरफ आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए सीमेंट के बैरिकेड्स भी हैं, उन पर जो है कटीले तार लगाए हुए हैं, जैसे कि हर दिल्ली के बॉर्डर्स पर इंतजाम किया गया है। वैसे ही भारी इंतजाम यहाँ पर भी है। सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवानों की तैनाती, पुलिस बल की तैनाती, भारी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन उसी के परे आपको बता दूं, ये जो पूरा रोड है ये हरियाणा किससे कनेक्ट करता है और यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये जो एक छोटा सा रास्ता आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं और आवाजाही में बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि अगर गाड़ियां यहाँ पर आकर रुकती थी पहले, पर अभी जो रास्ता है वो बंद कर दिया है, तो इसीलिए गाड़ियों को कई किलोमीटर तक पहले ही रोक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई किलोमीटर तक का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ रहा है। तो ये एक जो परेशानी है लोगों को सामना करना पड़ रहा है इन परेशानियों का, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं हर तरफ मेरे जो है यहाँ पर बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे होंगे। सीमेंट की दीवार बनाई हुई है, यहाँ पर सीमेंट जो है फर्श पर भी डाला हुआ है और कटीले तारों के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है हर तरफ नजर आ रही है। जैसे कि हम शुरू से ही दिखा रहे हैं, पंजाब और हरियाणा की जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर भारी सुरक्षा तैनात करना जरूरी भी है, क्योंकि किसान वहां पर बैठे हुए हैं। कई जो पराली जलाई थी उसमें मिर्च डाल दी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को काफी दिक्कत हुई थी। तो पुलिस कर्मियों की
सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है सुरक्षा को और कड़ा इंतजाम जो है करना पड़ रहा है। और साथ ही किसान और सरकार के बीच में लगातार बातचीत भी हो रही है, लेकिन बातचीत में अभी तक किसी तरीके का समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे जो किसान नेता है वो लगातार अलग अलग बयान भी दे रहे हैं और जो है हंगामा करने की भी बात करते हैं, आगे बढ़ने की भी बात करते हैं, दिल्ली कूच करने की लगातार जो है बात की जा रही है। लेकिन अभी तक उनको दिल्ली की तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पिछले किसान आंदोलन में, जब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर और दिल्ली के अन्य बॉर्डर्स पर आकर बैठ गए थे तो उनको वहां से उठाना बहुत मुश्किल हुआ था। तो इसीलिए अभी जो दिल्ली पुलिस है इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले से ही अलर्ट मोड पर है और हर तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हर तरफ सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। All right. Meanwhile, joining us from Singhu border is my colleague Brian Anthony Thomas. Manisha has just taken us through what exactly the situation is like on the ground at the Tikri border. Are also shown our viewers how via real-time satellite maps the Singhu border is also blocked. Brian, we can see there is not much movement that is taking place behind you. What can you tell our viewers? Well, Pia, we are at the very Singhu border, and here the traffic situation is very much compromised. Where we are standing is the flyover. If we show you the visuals also of the very place, you can actually see that the entire flyover has been barricaded. It has been stopped because of the barricading that has been done. A multiple layer of barricading has been done. You know, if you see also, you can see that the RAF have been deployed there, officials also, and this entire flyover that you can see, it's in normal days it's a smooth flowing traffic, but here it's completely barricaded. These are multiple layer of barricading, and now if we show you the visuals of the underneath the very flyover, you see here also there have been multiple layer of barricading that has been done. There have been first it starts with the metal cemented barricading that has been made by a concrete. It's a concrete barricading, and as a result of that also the road has been very narrowed, and if you can see also, you can actually understand that since then the entire road has been narrowed down, people are facing a lot of problem from going from one place to another, commuting from one place to another, and ahead of it there is another level layer of barricading with the metal barricading and the barbed wires. And then the third level of barricading has also been done with the containers and cemented racks, and as a result of that also people who are working, who are factory goers, who are working in the factories, who are school students, who are college students, their entire road has been compromised. They're just taking one small narrow lane to commute from one place to another, and this entire flyover is completely blocked. These are this very barricade you see, this has been permanently made to stop the farmers from entering the national capital, and as a result of that also you see there have been RAF also have been deployed. So they're on vigil. There have been CCTVs also installed on poles. So yes, as a result of that also, this entire flyover stretch has been blocked by the officials, by the police officials, and as a result of that, the sufferers, the people who are actually suffering are the very commoners. Yes, Pia. Indeed, and speaking of the commoners, we have taken a comprehensive look at what the situation is like at the borders. Let's also take a look at what exactly the traffic situation like is within the national capital. Joining us live from ITO in the national capital is my colleague Aditya Kumar. Aditya, over to you. Is there a traffic jam around you? यस आप जैसे देख रहे हैं कि मैं भी मौजूद हूँ आईटीओ पे, और आईटीओ पे सभी जगह पे बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, जो ड्रम्स लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बैरिकेटिंग है, मैं आपको अभी जो तत्काल स्थिति है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या है। देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है पूरी की पूरी रुकी हुई है, और कारण है एक तो ये पुलिस बैरिकेटिंग किए गए हैं, इस वजह से ये थोड़ा का पूरा जाम है, और ये कंटेनर जो रखे गए हैं बीच सड़क के ऊपर में, इस कारण से एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही ये बताया गया था कि दिल्ली जो सटे जो बॉर्डर है वहां पर जो है चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। इस वजह से लोगों को जो निवासी है, अगर रहने वाले जो नोएडा या दिल्ली या उत्तर प्रदेश दिल्ली के बीच में आना जाना करते हैं, तो पहले ही बताया गया था कि आप कोई और रास्ता अपनाएं, शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आपको ट्रैफिक में फंसने की जो स्थिति होती है वो ना हो। तो दिल्ली में भी आईटीओ में मौजूद हूँ मैं, और मौजूद यहाँ पे जो कई जगहों पे ऐसे बैरिकेडिंग किए गए हैं, पुलिस के जवान जो है तैनात हैं और गाड़ियों को रोक करके चेक कर रहे हैं, संदिग्ध लग रहे हैं उनको रोक रहे हैं।
और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक के जो है दिक्कतें लोगों को हो रही है। और आप देखेंगे कहीं सभी जगहों पे ऐसी स्थिति है कि लोग जो है पैदल ज्यादा यात्रा करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो या जो ऐसे वाहन है वो बहुत ज्यादा समय तक ट्रैफिक में फंसते हैं, बहुत ज्यादा समय तक जो रेड लाइट है वहां पर रुकना पड़ रहा है। कई जगह पे ऐसे पुलिस रोक करके जांच कर रही है, इस वजह से लोग पैदल जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बशर्ते ई रिक्शा या ऑटो के माध्यम से। अभी आईटीओ पे ये स्थिति है, मंडी हाउस पे भी अभी यही स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ जो दिल्ली से सटे बॉर्डर्स हैं उन सभी के पास में जो है चेकिंग अभियान चल रहा है, जिस वजह से जो है दिक्कत लोगों को हो रही है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.